Hello friends, so I welcome you all in this video lecture series, and now as you know I have already uploaded the lecture for level 1 of linear algebra and real analysis. Right now in this lecture basically I am going to discuss about the level 1 question of the complex analysis. Right, this is part 1. In the similar way you will get the part 2 also. Right, now see where you can see all these videos. So once you click on this playlist of my channel, you will get here one playlist, that is CSIR NET June 23's series. That is this series for level wise, right, where once you click you will get all these video in this. Except this, there are several videos that I have already uploaded in this playlist. Right, so once you click you will get the revision for the June 23. Right, now I'm going to start the first question. So now see, this is question number 1, right, and all these question for the level 1, that is for the basic level. First we try to read the question and then pause the video, think about 2 minutes and then give the answer. Right, now the first question is basically, let a complex function, this is the function that is given, fz is equal to x y plus iota y. Then we have to tell about this function what it is. फर्स्ट ऑप्शन fz इज कंटिन्यूस एंड एनालिटिक. पहला ऑप्शन कह रहा है कि ये जो फंक्शन fz है, जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, ये कंटिन्यूस होगा, एनालिटिक होगा. सेकंड इज fz इज नॉट कंटिन्यूस एवरीवेयर, हर जगह कंटिन्यूस नहीं होगा. थर्ड ऑप्शन इज fz इज कंटिन्यूस बट नॉट एनालिटिक. एंड फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ द एबव. अब देखिए, जो भी आपके पास फंक्शन दिया है, पहले आपको फंक्शन देखना है, और उससे भी पहले फिर मैं रिपीट करूँगा. फर्स्ट यू ट्राई टू पॉज द वीडियो, थिंक अबाउट 2 मिनट्स एंड देन गिव द आंसर. पहले आप आंसर कर लीजिए और उसके बाद फिर सोल्यूशन देखिए. तो होपफुली सभी ने पॉज कर लिया होगा वीडियो. एंड नाउ सी द सोल्यूशन. देखिए, जो फंक्शन दिया है, दिस फंक्शन fz इज व्हाट, दिस इज बेसिकली एक्स वाई एंड प्लस आयोटा वाई. राइट, दिस फंक्शन इज गिवन. नाउ सी, इट इज़ वेरी क्लियर. This real part is basically polynomial and imaginary part is also polynomial. Right, so very clear, every polynomial is continuous everywhere, so there is no doubt this function is basically continuous. Right, no need to calculate anything. You can find out the value of u and v at any point. Right, applying the continuity definition at every point it is continuous. Why? This is basically the polynomial. Right, and every polynomial is continuous. Right, so there is no issue with the first one. fz is continuous and analytic. Now we have to check analytic. Now see, this function, as you know, fz is given x y plus iota y. Right, so here I suppose u is equal to xy and v is equal to y. Just see, you know for the analytic we need to prove two conditions. First, the function must be satisfy the Cauchy-Riemann equation, and second, partial derivative must be continuous. This is one of the things. Now see, if you calculate del u by del x, right, this is Cauchy-Riemann equation, del u by del x is equal to del v by del y. Right, so del u by del x is what, partial differentiation with respect to x, you will get y, and partial differentiation del v by del y. Right, so del v by del y, once you calculate you will get 1. Hence these two are not equal. Just see, del u by del x is not equal to del v by del y. First equation of the CR equation is not satisfied. Even you can check the second one, del u by del y is equal to minus del v by del x also. Right, this is not satisfied, hence we can say that this is not analytic. Right, because you know Cauchy-Riemann equation is the necessary part for showing what the function is analytic. Right, first we have to show whether it satisfies the Cauchy-Riemann equation, and then 4 partial derivative are continuous. So since it is not satisfied, hence we can say that it is not analytic. Right, so I think this is clear to everyone. This is very easy. Now fz is continuous, analytic, no, this is not analytic. Continuous but not analytic. fz is not continuous everywhere. No, this function is continuous everywhere. Why? Because this is simple polynomial. Right, now third option, fz is continuous but not analytic. Yes, this third option is correct, and this fourth option, none of these is incorrect. So only option number C is the correct. Right, so I think this question is clear, very basic question from the complex level. Right, again I repeat,
first I am just taking the problem from the level 1, right? Level 1 means the basic problem, and then once we move for the next class, then we just increase the level 2, 3, 4, 5 like this, right? So if you have any comment, you can just write in the comment box, and if you are facing any problem at any stage, you can share with me. Now see the question number 2, right? Read the question again. I tell you, first you read the question, pause the video, think 2 minutes, and then solve, because once you see the question and then solve, there is no use, right? Why? Because अल्टीमेट गोल इज़ व्हाट, टू इम्प्रूव योर थिंकिंग पावर, राइट? जब तक आप सोचेंगे नहीं, तब तक आप प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि हर बार प्रॉब्लम नए नए आते हैं, राइट? तो सबसे पहले खुद की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करिए. नाउ सी द क्वेश्चन. व्हाट इज़ द क्वेश्चन? क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल. आपसे इस इंटीग्रल की वैल्यू पूछ रहा है, राइट? इंटीग्रल सी मॉड जेड बाई जेड डी जेड यूजिंग काशी इंटीग्रल फार्मूला, वेयर सी इज व्हाट, मॉड जेड इज इक्वल टू 2. तो देखिए सभी को पता है काशी इंटीग्रल फार्मूला. व्हाट इज काशी इंटीग्रल फार्मूला? दिस इज एफ जेड डी जेड एंड डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए रेज टू द पावर n plus 1, right? This is equal to 2 pi iota divided by factorial n, and it is nth derivative at a, right? This is the simple formula. Now see, when this formula is applied, basically Cauchy integral formula is applied if anywhere this circle, means this closed contour may be anywhere. Here it is basically center is 0, radius is 2, so I suppose this is the circle, right? This is the circle which center is basically 0. Here is already given z minus 0 is equal to 2, so center is 0 and radius is 2, right? So we can draw this. Now here what is the Cauchy integral formula? This fz must be what, analytic, and a must be lie inside this circle. So in this problem, if you see c mod z and divided by z dz, what its value? Here center is, if you just see here, it is basically nothing. Z means z minus 0, right? So we can say that a is what, a is 0, which is basically lie inside this circle, so there is no issue, this lie. N plus 1 is also clear. N plus 1 is equal to 1, so n is basically 0, right? This is the simple pole. Now what about this numerator? Just see, this numerator is mod z, right? And everyone knows this mod z is not analytic, right? It is not analytic, and if the function is not analytic, we cannot apply the Cauchy integral formula. Hence we can say that it is what, this value does not exist, right? Here it is given 2 pi iota, no. Minus 2 pi iota, no. 0, no. So this option number D is correct. This integral does not exist. Why? Because for the Cauchy integral formula, we need this function must be analytic, and we know mod z is not analytic function because it's not differentiable, right? So hence we can say that this option number D is correct, right? So these type of problem are also very very important. These are basic problem. Once your basic is clear, you can solve the advanced problem also, right? So I think it is clear. Option number D is correct, right? Now we move on the next question. If again I repeat, first try to read the question, pause the video and solve it, right? Now see the next question, question number 3. So now see the question number 3. So again, first we read the question carefully, right? And then pause the video and think 2 minutes and then solve this question. Now see the question. What is the question? The function fz is equal to sine 1 upon z minus 3. So now it is clear, this is the complex function. This is given what, fz is equal to sine 1 upon z minus 3 has first option simple pole at z is equal to 3. It talk about the simple pole. Second option देखिए essential singularity at z is equal to 3. Third option non isolated essential singularity at z is equal to 3, and fourth option is isolated essential singularity at z is equal to 3. अगर पहले ऑप्शन को देखिए तो यहाँ पे पोल है, रेस्ट ऑफ द 3 ऑप्शन आर essential singularity, right? Just see, this question is from part C. One more information, this question is from part C. Now see, हम सभी जानते हैं Laurent expansion. Once we define the pole, essential, removal or everything, everyone knows कि in the Laurent expansion, if we have a series an z minus a raised to the power n and plus summation bn z minus a raised to the power minus n. Once we have this principal part,
we get the finite number of term of this Bn, means coefficient of this negative power, then it is what? Then it is pole, right? If we are getting all this negative power coefficient is 0, then it is removed singularity, and if we are getting the infinite number of term in the negative power, right, then it is called essential singularity. Now it is very clear, if we have a function fz is equal to sine 1 upon z minus 3, right? So we know the sine expansion, we can expand this. So first term is what? 1 upon z minus 3, right? Z minus z cube by factorial 2. So z cube means what? 1 upon z minus 3 whole cube upon factorial 3 plus 1 upon factorial 5, 1 upon z minus 3 raised to the power 5, and so on, right? So here we are getting how many terms? Infinite number of term of the negative power, right? And hence we can say that it is essential singularity. Why? Because just see, this is infinite series. So this first option, simple pole, that is wrong, right? Second option, essential singularity at z is equal to 3. Yes, at z is equal to 3, this is essential singularity. Now the problem start here. Non-isolated essential or isolated essential. Everyone knows when it is non-isolated and when it is isolated. If this point is the what? Limit point of zeros. Just see, if this point is limit point of zeros, right, in that case it is isolated, right? Isolated singularity. If we have the limit point of poles, in that case it is non-isolated singularity, right? These two singularity are clear. Now see this case. So now see the function fz is what? Fz is equal to, given it is basically sine 1 upon z minus 3, right? And we can equate this is zeros, right? We can find out zeros because there is no pole. Only we can find out the zeros of the function where this function is 0. So now we can equate. We know when sine function is 0, this is for all n pi, right? For all number integer, you will get the sine is what? Sine function is always 0, 1, 2, 3, 4, 5 or whatever you take, right? Now up, just see here, we can equate this, दोनों को equate कर दिया, और यहाँ से साइन की वैल्यू साइन एन पाई के बराबर है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं व्हाट? n माइनस 3 इज इक्वल टू एन पाई, राइट? देखिए ऑब्जेक्टिव क्या है, हमने जीरोस निकाला. दिस इज व्हाट? दिस आर द जीरोस. हम जीरोस निकालना चाह रहे हैं, उसकी लिमिट पॉइंट निकालना चाह रहे हैं. अगर जीरोस की लिमिट पॉइंट आ गया, यही पॉइंट जो आपको कह रहा है z इक्वल टू 3, देन इट इज आइसोलेटेड सिंगुलरिटी. सो यहाँ से देखिए, नाउ व्हाट वी कैन डू, यहाँ से z की वैल्यू आप निकाल सकते हैं. सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे. सो z इज इक्वल टू व्हाट? यू विल गेट 3 और 1 अपान एन पाई आ जाएगा, तो 3 प्लस 1 अपान एन पाई, राइट? एंड दीज आर द जीरोस. यही वो पॉइंट है, जितने भी n इक्वल टू 1, 3, 4 रखेंगे, सारे पॉइंट पे जीरोस आएगा. तो इसके लिमिट पॉइंट निकालते हैं और देखते हैं क्या वो 3 आ रहा है. सो n टेंड्स टू इनफाइनाइट एंड हियर वी विल गेट व्हाट? z, दैट इज इक्वल टू लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इनफाइनाइट एंड दिस इज 3 प्लस 1 बाई n पाई, राइट? सो वंस यू टेक द लिमिट, देखिए n टेंड्स टू इनफाइनाइट करेंगे, 1 बाई इनफाइनाइट दैट इज 0. सो आपकी लिमिट क्या आ गई? 3. दिस मीन्स दैट वी आर गेटिंग द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन इज व्हाट? 3. हेंस वी कैन से दैट इट इज आइसोलेटेड सिंगुलरिटी. मैंने आपको क्या बताया कि आपको जीरोस निकालना है, सेट ऑफ जीरोस, और उसकी लिमिट पॉइंट निकालनी है. इफ इट इज द सेम पॉइंट, वी कैन से दैट पॉइंट इज बेसिकली आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, राइट? सो दिस इज बेसिकली आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी. ये पोल यहाँ तो हो ही नहीं सकता, राइट? हेंस दिस इज इनकरेक्ट. सो फॉर दिस क्वेश्चन विच ऑप्शन आर करेक्ट? ऑप्शन नंबर बी एंड डी आर करेक्ट, राइट? ऑप्शन नंबर बी एंड डी. बी इज इसेंशियल सिंगुलरिटी. एंड नाउ here why this last option? Why? Because we have calculated the limit point of poles and limit point of zeros, and limit point of zeros are isolated singularity. So I think this question is clear. If you have any doubt, then you can just comment in the comment box, right? Now चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4. Now see the question number 4. This question is also very important. Now what is the question? The function fz is equal to e raised to the power 1 by z has. नाउ सी अगेन दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू सिंगुलरिटी. मैंने इसमें सिंगुलरिटी के प्रॉब्लम ज़्यादा लिए हैं क्योंकि सभी को पता है पार्ट सी के बहुत सारे क्वेश्चन सिंगुलरिटी से रिलेटेड आते हैं इन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस. नाउ अगेन आई रिक्वेस्ट
प्लीज़ पॉज द वीडियो, थिंक 2 मिनट एंड देन सी द सोल्यूशन। देखिए सबसे पहले होपफुली सभी ने पॉज करके सॉल्व कर लिया होगा। सो नाउ सी द फंक्शन एफ जेड इज व्हाट। एफ जेड इज बेसिकली गिवन e raised to the power 1 by z. So first option says what? First option, and essential singularity at z is equal to 0 and essential singularity at z is equal to infinite. A pole at z is equal to 0 or the last option fz has no singularity. देखिए सबसे पहले हमें ध्यान से समझना है कि जब भी आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन दिया हो, यू ट्राई टू एक्सपेंड दिस, राइट। अगर आप एक्सपेंड करेंगे यू विल गेट वेदर नेगेटिव पावर आर गेटिंग आर नॉट। तो सभी को पता है ई रेज टू द पावर 1 बाई जेड है, तो ये भी सभी को पता है कि 1 प्लस जेड अपान 1 प्लस जेड स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2। सो यू विल गेट जेड इज व्हाट इन प्लेस ऑफ जेड, दिस इज 1 बाई जेड। सभी को ई रेज टू पावर जेड का एक्सपेंशन याद है। सो दिस इज 1 अपान फैक्टोरियल 2 1 अपान जेड होल स्क्वायर प्लस 1 अपान फैक्टोरियल 3 1 by z whole cube and so on. Now see, it is very easy. Here we are getting how many negative term? So all these are negative term and we are getting what? Infinite series. So it is very clear this is essential singularity, right? This is not the pole, because in pole we need a finite number of term of this negative term. So देखिए किस पॉइंट पे है? z is equal to 0. It is also clear at z is equal to 0, right? The function does not exist and hence we can say that z is equal to 0 is the essential singularity. So this question is very easy. And essential singularity at z is equal to infinite, no. A pole at z is equal to no. Why pole? Because this don't have the finite number of term. fz has no singularity, no, it has a singularity at z is equal to 0. और वो कैसी singularity है? This is essential singularity, right? So I think this question is clear. This question is very easy, right? And easy but yes concept wise, right? So I think this question is also clear to everyone. जैसे मैंने पहले ही बताया कि these are level wise, तो सबसे पहले मैंने level 1 के प्रॉब्लम ले रहा हूँ, फिर level 2 के, फिर level 3, level 4 and then level 5. One by one we solve these type of problems, right? Now I think this question is clear. We move on the next question, that is question number 5. Now see, this is question number 5. First we read the question carefully, pause the video and then think about 2 minutes and then see the answer. Now see what is the question. The question is the function fz is equal to z square plus lambda z upon z plus 1 whole square if the residue of fz at its pole is 1. Everyone know what is residue, right? Residue is always calculated at its pole. तो कह रहा अगर इसका रेजिड्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए, किस पॉइंट पे? इसके पोल पे, राइट? देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस लेमडा? बेसिकली वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट? दिस इज द फंक्शन इज जेड स्क्वायर प्लस लेमडा जेड एंड डिवाइडेड बाई जेड प्लस 1 होल स्क्वायर। होपफुली सभी ने पॉज करके इसको सॉल्व कर लिया होगा एंड नाउ सी द सोल्यूशन। तो सभी को रेजिड्यू भी पता है। तो देखिए यहाँ पे जो पोल है किस पॉइंट पे, सबसे पहले हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा पोल किस पे। सो देखिए पोल किस पे? z इज इक्वल टू -1 एट z इज इक्वल टू -1 इज पोल। और उस पोल का ऑर्डर भी देखना होता है क्योंकि जब हम रेजिड्यू कैलकुलेट करते हैं, राइट, इस पोल ऑफ ऑर्डर, और इसका ऑर्डर भी दिख रहा, इट्स ऑर्डर इज बेसिकली 2। देखिए यहाँ पे पावर 2 है। सो एट z इज इक्वल टू 1 इट इज़ पोल ऑफ ऑर्डर 2। तो देखिए अब रेजिड्यू कैसे निकालेंगे, सभी को पता है रेजिड्यू का फार्मूला, रेजिड्यू एट विच पॉइंट? रेजिड्यू r लिख देता हूँ, राइट। वी हैव टू कैलकुलेट एट रेजिड्यू एट z इज इक्वल टू -1 क्योंकि इसके पोल पे ही दिया है, तो इसकी वैल्यू पहले से क्वेश्चन में आपको दिया है, दिस इज 1। सो आई जस्ट पुट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड 1। देखिए यहाँ पे दिया है रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन एट इट्स पोल, तो इसके पोल पे रेजिड्यू मैंने पहले ही लिख दिया। एंड नाउ हाउ वी कैलकुलेट, सिंस इट्स ऑर्डर इज 2, तो इसका क्या हो जाएगा फार्मूला 1 अपान m-1, एक कम होता है, राइट। सो वी विल गेट हियर व्हाट? 2 - 1, राइट। एंड d बाई डी जेड दिस इज व्हाट? रेजिड्यू का फार्मूला सभी को पता है, z माइनस ए क्या है? -1, तो माइनस प्लस 1 whole square into fz, that function, right? So I directly put this value z square plus lambda z and divided by this is z plus 1 whole square, right? Here I just write the formula for residue for order m. So residue at r is equal to, this is nothing but 1 upon factorial m-1. This is the order d by dz, and here
दिस इज जेड माइनस ए, जिस पॉइंट पे पूछ रहा हूँ उसका ऑर्डर एम, एंड एफ जेड. दिस इज द सिंपल फार्मूला. सो आई जस्ट पुट द सेम थिंग, 1 upon factorial m minus 1, order is 2, so 2 minus 1 d. Here also this is m, and this is basically 1 less time, m minus 1, right? It is basically, if its order is m, then it is basically 1 less time differentiable, right? So this is z. जब आपका ऑर्डर 2 है तो एक कम करेंगे तो d by dz हो जाएगा, राइट? सो z, दिस एंड दिस विल बी कैंसल्ड. सो फाइनली व्हाट यू विल गेट, देखिए यहाँ से आपको जब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ तो फैक्टोरियल 2 minus 1 दैट इज़ 1, और इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे, और देखिए किस पॉइंट पे निकालना है, z इज इक्वल टू -1 पे, तो एट द लास्ट आपको पुट करना पड़ेगा z इज इक्वल टू -1. सो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, यू विल गेट 2z एंड प्लस लेमडा, राइट? जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू z, दिस इज 2z एंड दिस लेमडा z दैट इज सिंपली लेमडा, राइट? और यहाँ पे एक चीज़ और आपको ध्यान देना है, z की वैल्यू -1 पुट करनी. सो फाइनली मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 इज इक्वल टू, देखिए -1 पुट करेंगे इन प्लेस ऑफ z, यू विल गेट -2 एंड प्लस लेमडा. सो यहाँ से लेमडा की वैल्यू क्या आ गई, फाइनली वी आर गेटिंग लेमडा इज इक्वल टू 3, राइट? सो दिस वैल्यू फॉर विच the residue of the function fz at its pole is 1, then the value of lambda is what, 3. तो देखिए इसमें से ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी इज़ 1, ऑप्शन नंबर सी इज़ 2 एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ नन. तो पहले तीनों में तो कोई नहीं है, सो दिस ऑप्शन नंबर विच ऑप्शन इज़ करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, क्योंकि यहाँ से इसमें से तो कोई नहीं है. दिस वैल्यू ऑफ लेमडा इज़ 3 फॉर विच द रेजिड्यू ऑफ दिस फंक्शन इज़ व्हाट, एट इट्स पोल इज़ 1. सो आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू एवरीवन. और ऐसे ही जितने भी आपके प्रॉब्लम अभी कराया हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5, राइट? ऑल दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड बेसिक क्वेश्चन. दिस इज लेवल 1, राइट? इसी तरीके से ये पार्ट 1 है, इसी तरीके से आपको पार्ट 2 भी मिलेगा कॉम्प्लेक्स का, लेवल 1 का, राइट? वन मोर इन्फॉर्मेशन टू एवरी वन, दोज हु आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन CSIR June 23, they can join. A batch is already running, and in this batch we are already discussing how to approach, how to correlate, right? You will get the online classes, recorded video, PDF notes, PDF books, right? The medium is basically English and Hindi both. Live classes are scheduled 7 p.m. and also at 10 p.m. Validity is 6 months, right? You will get the test series also in this lecture. So those who are interested, they can join. Otherwise the question are already discussed on this YouTube. Now see the next, all these paper, major and minor paper, we are including in this series, right? Like real analysis, linear algebra, complex analysis, modern algebra, differential equation, both ODPD, minor papers, numerical analysis, calculus of variation, integral equation, topology and part A, right? So those who are interested, they can join. Right now we are giving the 70% off for June 23, right? So those who are interested, they can contact to us at this number. Thank you for watching this video.